अगर आपको भूख लग रही है एंड आपको कोई ऐसी रेसिपी चाहिए जिसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे लेकिन टेस्ट में वो एकदम यमी हो, देन दिस रेसिपी इज़ परफेक्ट फॉर यू। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एग भुर्जी। लेकिन शुरू करने से पहले, इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, मेक श्योर दैट यू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं नई वीडियोज़ अपलोड करूँगी। एंड विद दैट सेड, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 5 एग्स ऐड कर लेते हैं। Now let's add in some salt, 1 teaspoon red chili powder, half teaspoon haldi powder, 1 teaspoon black pepper and 1 teaspoon garam masala. And let's add some chopped green chilies. परफेक्ट एग भुर्जी बनाने के लिए ट्रिक यही है कि आप एग्स को बहुत अच्छी तरह से बीट करें। अब हम एक कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं 3 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल एंड 1 चॉप्ड अनियन। When the onions become slightly brown, हम इसमें ऐड कर देंगे chopped tomatoes. Give it a nice mix. Now let's season it with some salt, 1 teaspoon red chili powder, 1 teaspoon garam masala and 1 teaspoon black pepper powder. इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे and then we're going to cook them for 2 to 3 minutes. अब ये कुक हो चुका है, so now is the right time to add our egg mixture into it. आफ्टर मिक्सिंग इट अ लिटिल, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर, स्टार्टिंग में एग्स जो हैं वो पैन की साइड्स पर चिपक सकते हैं, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर ही कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए एंड इसे स्टर करते रहेंगे एंड इस तरह से इसकी एजेस को स्क्रैप करते रहेंगे और थोड़ी देर बाद ये थोड़ा कुक होने लग जाएगा और इसकी एजेस भी थोड़ी क्लीन होने लग जाएंगी, तो हम इसकी फ्लेम को बढ़ा देंगे। So now our egg burji is ready and it has got this beautiful color onto it. If you guys enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe so that you can watch many more amazing videos like this one, and have a wonderful day guys. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching.